Assalamualaikum everyone. Welcome to another session arranged by Caregiver Alliance by Professionals, or CAPS simply. It's a non-profit medical camps, arranging free donor camps, and also extending its services during times of natural disasters or pandemics such as the one. I'm Xenia, hosting today's session on curing patients with allergies, and we're going live on both Facebook as Caregiver Alliance main channel on YouTube, that is. So for today, we have Dr. Farooq Nawaz, who is a pulmonologist here and also is currently working in COVID ICU at the said hospital. Sir Caps is really pleased to have you with us today. Also, Hello. just Sorry, making sure, I just am I dropped audible? the Am voice. I audible? Yeah. जी जी अभी आ रही है. I'm just going to repeat that we are really pleased to have you with us today, and also thank you so much for taking time out of your undoubtedly hectic routine. Yeah. Thank you so much to you and this platform also that they have invited me, and also thanks to you for discussing this issue which is currently very in this crisis, not only in this corona pandemic, but also this asthma and allergy topic is very common among public, most commonly in urban areas and populated areas. Okay, so sir, without further ado, I'm gonna start with very basic asthma and allergy, and then we're gonna advance towards something which is complicated about it, right? So, can you please start with a very layman level Yeah. basic know-how into asthma and allergy, as in to what extent must a common man be familiar or be aware of it? बेसिकली जब हम एस्थमा की बात करते हैं या एलर्जी की बात करते हैं तो इट स्टार्ट्स विद वेरी कॉमन थिंग्स लाइक पेशेंट्स को खांसी होती है, उनको किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है, उनका सांस खराब हो जाता है, उनको सांस लेते हुए सीटियां बजनी शुरू हो जाती हैं, या इवन अगर उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट चले जाते हैं तो लोग इसको इग्नोर करते हैं. दैट इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम विच वी मोस्टली एनकाउंटर एज ए प्रोफेशनल, कि लोग आते हैं और उनको इस चीज का बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता कि उनको ये बीमारी इस तरीके से चल रही है. मतलब कि वो इसको सिंपल कफ के तौर पे या सिंपल एलर्जी के तौर पे या सिंपल मौसमी चेंज, सीजनल चेंज, या जो मौसम के बदलने के साथ जो सांस की खराबी होती है उसके तौर पे लेते हैं. तो अगर जैसे मैं अभी दोबारा रिपीट करूं, फैमिली हिस्ट्री आ रही हो या अगर आपको सीजनल चेंज आता हो हर साल सर्दियों गर्मियों की वेरिएशन के थ्रू, तो दैट शोज कि यू आर हैविंग द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एस्थमा. सो अगर किसी भी ऐसी पब्लिक को अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीजें आ रही हो, ऐसे साइन सिम्टम्स आ रहे हो, अलामत आ रही हो, तो ही और शी मस्ट कंसल्ट to the respiratory physician, to the general practitioner, या इवन आपको हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनको आप कॉमनली एनकाउंटर करते हैं और इग्नोर कर देते हैं. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. हमें इनको एनकाउंटर करते ही डॉक्टर के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहिए ताकि हम इसको आगे फर्दर जो है ना ड्यू प्रोसेस है इसको प्रोसीड करें और इस डिजीज को वर्स होने से बचा सकें. हेलो. हेलो. I'm really sorry for dropping out of the session due to some unavoidable internet issues, I guess.
Anyways, for the audiences, one thing that I'd like to convey is that if you intend on asking any questions, to drop them in the comment section so that we can ask them later on. Right. So, for the very first question that is being asked by very commonly is, um, how does the care which is given to people with asthma and allergy differ from people who have other respiratory disorders? Sorry, question repeat again. How adults? How does the care that is given to patients who have allergies and asthma differ from patients who have other respiratory disorders? सॉरी, आवाज क्लियर नहीं आई. हाउ द It's okay. क्वेश्चन रिपीट करें. The question is how does the care which is given to patients of asthma and allergy differs from the care that's given to patients with other respiratory disorders? Yeah, okay, I I got hope it I'm now. I clear. got it. Sorry, internet has the issue. Yeah, now I got it. Uh, there is one basic difference in asthma and allergy. The main thing which the disease process requires is the patient education. In asthma and allergy, the main treatment and the prevention depends upon the patient compliance and reliability. In other respiratory disease, we usually don't require inhalers and other techniques which mostly patient must use. बाकी जो डिजीजेज हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी हैं उनके अंदर इस तरीके की टेक्निक्स इतनी मैटर नहीं करती, बट इन द केस ऑफ एस्थमा दिस टेक्निक मेनली मैटर कि आप जो इनहेलर यूज कर रहे हैं, जो आप पंप ले रहे हैं, जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं, वो कितनी अच्छे तरीके से ले रहे हैं, कितने डॉक्टर्स के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, और साथ में आपकी कितनी कंप्लाइंस है. और इसमें जो रोल है पेशेंट का दूसरी डिजीज के हवाले से इसलिए ज्यादा है कि जो पेशेंट की एजुकेशन है वो मैटर करती है, क्योंकि एस्थमा इज बेसिकली रिलेटेड टू एलर्जी, और एलर्जी एक डॉक्टर को वैसे नहीं पता होगी कि इस पेशेंट को किस चीज से एलर्जी है. सो स्पेसिफिकली पेशेंट से जो हिस्ट्री लेनी है, जो पेशेंट की एजुकेशन लेवल है, उसको देखते हुए हमने पेशेंट को गाइड करना है कि आपको किस चीज से स्पेसिफिकली एलर्जी होती है. लेट सपोज उसको वीट से होती है, उसको ग्रेन से होती है, उसको पोलन से है, उसको डस्ट से है, उसको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, उसका एनवायरमेंटल एक्सपोजर है. हम पेशेंट के प्रूव करेंगे कि आपको इस चीज से स्पेसिफिक एलर्जी है, एंड द पेशेंट मस्ट कंप्लाइंट विद दैट ऑर्डर्स कि उसको ये डायरेक्शंस कैरी आउट करनी है, उसको ये ऑर्डर्स फॉलो करने हैं. उसके साथ साथ पेशेंट की जो मेडिकेशन है उसकी एक टेक्निक होती है, उसको स्पेसिफिकली वो यूज करेगा. अगर आप वैसे कोई आपको इशू हो गया रेस्पिरेटरी का, आप मेडिसिन लेते हैं, या इवन नॉन रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर आप मेडिसिन लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं. बट इन द केस ऑफ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एस्थमा, आपने पेशेंट्स की एजुकेशन लेवल और उसके जो ट्रीटमेंट की कंप्लाइंस है उसको मेक श्योर करना है. उससे जो है ना पेशेंट्स का जो एक आउटकम है, जो उसका प्रोग्नोसिस है, दैट विल बी मोर एज कम्पेयर टू अदर डिजीजेज. हेलो.
I'm really, really sorry. This is so unfortunate. I have no idea what's wrong with PTCL these days. So if you have already answered the Yeah, second it's okay. question, I'm not gonna repeat it. You've already answered it. Yeah, I have already answered, but I'm not sure that it will be aired or not. It's okay. I guess we should, move on to the third question. Okay, we talked about how the care differs between these two different patients. Now, and then the healthcare team, of course. So, the fourth question is that what is the difference now about what kind of care you provide patients who have COVID-19 and they have allergies and or asthma, and patients who does not have COVID-19 but they have allergies and asthma. What difference lies there? There is a big difference. Yeah, well, honestly speaking, because if a patient already having an asthma or allergy and COVID is also a respiratory issue, and the superimposed infection on already existing allergy or asthma can worse the condition. So there are two different things. If a patient has allergy or not. If having allergy and a superimposed COVID-19 can worsen the condition, so the extra care, the extra vigilance, the extra nursing care, the extra physio care, all things need to be on a higher side in a patient having COVID-19 and previously having the asthma or allergy. In the same case, अगर एक पेशेंट है जिसको प्रीवियसली एस्थमा की या एलर्जी की हिस्ट्री नहीं है और उसको सिंपल अगर एक रिसेंट इन्फेक्शन उसने एक्वायर्ड किया, वो चाहे नमोनिया है, वो चाहे कोविड-19 है रिसेंटली जो पैंडेमिक है, या कोई भी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो उसकी केयर एज कंपेयर टू द पेशेंट जिसको प्रीवियसली एस्थमा, वो उस लेवल की केयर नहीं होगी बिकॉज उसको ऑलरेडी पहले कोई रेस्पिरेटरी इशू नहीं है. Although COVID-19 का एक अलग से प्रोटोकॉल है और asthma has a different management, but when these two things combine, the outcome can on the lower side. So in treating those patients, we need to be extra vigilant. We must give them extra care, the treatment plan, and the ICU care, the nursing care, the physio care, everything is on higher side and requires more vigilance from health professionals. Okay, so this question is mine. Like, it's not from what was to be asked. Am I getting to the right point? Okay, if a person has allergy and asthma, so if he kind of has more probabilities of elevated cytokine storm syndrome. Sorry, Is this I'll something repeat. related to that? If a patient having If a allergy, person has allergies as well as and asthma and mhm, COVID-19 is more serious or critical because he also has elevated cytokine storm syndrome. mhm. Yeah, you are right. Is it something In related to that? COVID-19, yeah, in COVID-19, if a patient is having coronavirus, so we go for a CRS profile, cytokine release profile, in which we go for ferritin, LDH, and D dimers. In the same way, you have and CRP. We check for these four levels, and since working in the COVID-19 ICU since last 6 months, since the beginning of this pandemic, we always go for this profile. And in COVID-19 patients, this profile, this CRS profile, these lab values are always abnormal and on higher side. So you are right, in COVID-19 there is a CRS phenomena, and lab values are on the higher side. Okay, so if you were to compare the CRS with patients with COVID-19 and patients who you must have studied about who had SARS-CoV or MERS, so is there any difference in between the CRS profiles of these patients? No, not Is necessarily, this pandemic because more elevated? yeah, Hmm. no, this is not necessary that there will be any difference because it's a novel coronavirus, COVID-19, and SARS and the previously which affected the in Dubai and as well as Asia, that was also a viral infection, and in viral infection there is always a cytokine release syndrome. So it depends upon the severity of the viral infection and class of the virus, in which class, in which category that virus belongs, and how much severe and how much immunocompromised the affecting person is. According to that criteria, there will be a derangement in the CRS profile, and it not necessarily in the viral infection, in other infection.
we can also see these abnormal values. LDH can be raised in other conditions like in cardiac failure. CRP in other inflammatory conditions is also raised. D-dimers raised in DVT, pulmonary embolism. So we can't specifically say that this CRS profile is specifically linked to COVID-19 or SARS or MERS and something other viral infection. It can be raised in any condition in other diseases as well. Okay, so it means that a person should always carry out a differential diagnosis in order to confirm if it's a Yeah, COVID case or yeah. not. Yeah, the problem is right now we are having a pandemic. So if this value is on a higher side, we must suspect the COVID-19 at this time. But previously, as there was no pandemic and there was no coronavirus, so these lab values must go for, and we must look for differential of other diseases. But right now we have the pandemic, so our first diagnosis go towards the COVID-19. Though it can have a differential diagnosis, as you said. Okay, great. So we'll come back to our topic, and we'll now ask about the basic caring principles. You know, if there is a flow sheet or a general, protocol that can be followed for such patients, for taking care of such patients who have COVID-19 as well as allergy as well as asthma. Hmm. So the best caring and the basic principle, as I already said, is the patient education. So if a patient is having asthma and allergy, and he even don't know to which allergen he is sensitized, that thing is main important. एक पेशेंट जिसको पता ही नहीं है कि उसको किस चीज से एलर्जी हो रही है, तो वो उससे अवॉइड ही नहीं करेगा, और जब तक वो अवॉइड नहीं करेगा वो कंटिन्यूअसली एक्सपोज होता रहेगा उस स्पेसिफिक एलर्जन को. सो द फर्स्ट एंड foremost thing which asthmatic patient must to do is to recognize that specific allergen which is causing that sensitivity, which is causing that reaction. सो फर्स्ट थिंग कि हम उस एलर्जन और उस एनवायरमेंटल एक्सपोजर से अवॉइड करें, ताकि हमारा जो एक कंटिन्यूस एक्सपोजर हो रहा है उस खास एलर्जन को, स्पेसिफिक एलर्जन को, जो कि आपके एस्थमा के सिम्टम्स को कर रहा है, जो आपकी एलर्जी को एनहांस कर रहा है, उससे अवॉइड करना है. सेकंड थिंग इज द पेशेंट कंप्लायंस. एज आई ऑलरेडी सेड कि लोग जो है वो अगर उनको एस्थमा और एलर्जी इज अ सिम्पटम व्हिच रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मोर देन द अदर डिजीज, बिकॉज ये कोई आपका कोई नजला जुकाम या कोई और पेट का दर्द या जोड़ों का दर्द, दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट कि आप 5 दिन की मेडिसिन ले लेंगे, 10 दिन की मेडिकेशन लेंगे तो वो आपका ठीक हो जाएगा. इट इज द ब्रोंकोडाइलेशन. आपकी जो सांस की नालियां हैं वो तंग हो जाती है, उनको खोलना होता है. मशीन से हम उसको ऑपरेट करके नहीं खोल सकते, उस वो मेडिसिन जाएगी अंदर, उसको प्रॉपर इनहेल करेंगे वेसल्स, और जो म्यूकोजा है उसके बाद जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है दैट विल requires time, and then it will be bronchodilation and it requires a time. So we also advise patient to take medicine for 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, and for the lifelong. But the problem is patient get used to it. Patient become irritated कि मैंने अब 1 महीना खा लिया है, मेरे सिम्टम्स ठीक हो गए हैं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ. पेशेंट खुद से छोड़ देते हैं. फिर साथ में जो वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, स्पेसिफिकली इनहेलर टेक्निक्स जो होती है वो उनकी गलत होती है. वो मेडिसिन ले जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाला उनको गलत बता देता है, या इवन अगर वो बताता भी है तो पेशेंट आके डॉक्टर से कंफर्म नहीं करते, विच इज द मेन प्रॉब्लम इन एस्थमेटिक पेशेंट्स, कि उनकी इनहेलर की यूज करने की टेक्निक्स नहीं ठीक होती. वो मेडिसिन लेते हैं बट दैट स्टक्स टू द ओरल कैविटी. इनहेलर आपने प्रॉपर उसको इनहेल करना है सो दैट इट गोज टू द टेकिया एंड ब्रोंकाई, वो आपकी सांस की नालियों में जाए इंस्टेड कि वो आपके मुंह के बकल कैविटी के अंदर ही डिस्पर्स हो जाए. सही. और साथ में एक इंश्योरेंस होती है जो कि आपके अगर पेट का दर्द है वो ठीक हो गया, पेशेंट ओके है. एस्थमा के लिए आपको एक थोड़ा सा हौसला भी चाहिए होता है पेशेंट को, एक उसकी साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट भी चाहिए होती है पेशेंट को, बिकॉज जैसे ही मरीज का सांस खराब होता है एस्थमा के अंदर तो ही गेट्स इरिटेटेड, वो पैनिक हो जाता है, वो टेकिपनिक हो जाता है. तो एक मॉरल सपोर्ट है, एक जो सोशल सपोर्ट है, उसको जो फैमिली सपोर्ट है, द ऑल थिंग दीज मैटर एस्थमा के अंदर. तो इन सारी चीजों को अगर हम लेके चले तो जो है ना फिर एक पुअर जो कंट्रोल है उसको हम गुड कंट्रोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और पेशेंट स्टेबल भी रहता है. अच्छा, अदर देन दिस के पेशेंट छोड़ देता है उसको बीच में, तो उसके ही मसले उससे रिलेटेड रहते हैं. हाउ डेंजरस इज इट ऑल्सो कि देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी कि जो एंटीवायरल रेजिस्टेंस है या माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है बेसिकली,
वो इस तरह से डेवलप होता है। और इस बिकॉज कोरोना वायरस इज समथिंग विच फ्रिक्वेंटली म्यूटेट्स, इट्स अ वायरस विच लव्स टू म्यूटेट, राइट, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ दीज तरह से। अगर लोग कोविड-19 के साथ अपनी करेंगे तो हाउ डेंजरस कैन इट बी, और कितना प्रोबेबल है कि हम एक नया पेंडेमिक जो है वो अपने ऊपर। इट इज टू अर्ली टू से कि हम जो है वो फ्यूचर में क्या देखना चाह रहे हैं या हम क्या फोरकास्ट कर सकते हैं। अब फॉर्चुनेटली इन वन वे और अदर वी सर्वाइव दिस पेंडेमिक, ठीक है, दो देयर वर मेनी डेथ्स बट नॉट एट दैट लेवल इन द अदर वर्ल्ड, ठीक है। अभी इंडिया के अंदर देख लें, स्टिल देयर आर मेनी डेथ्स in India. So the virus itself is getting mutated. You are right. China, USA, Europe, Pakistan, Asia, and India. There are different strains which obviously have different impact. But fortunately, we have survived either immunity factor or the virus itself get mutated. So we just can't say right now that in which category or in which mutation in the next decade, in the next 1 year, 2 years, 5 years, virus will get mutated. But as far as this asthma is concerned, अगर जैसे आपने पूछा कि पेशेंट अगर छोड़ देता है बीच में, अगर एक मेडिसिन ले रहा है और वो इसको छोड़ देता है, तो ऑब्वियसली उसका एक पुअर आउटकम होगा, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर जाके मेडिसिन इफेक्ट कर रही है, अगर वो वहीं पे ही उसको छोड़ देगा तो वो जो पिछला उसका एक प्लेटो फेज आया हुआ था डिजीज को कंट्रोल करने का, वो पुअर हो जाएगा, ठीक है। अगली बार जब वो दोबारा से उसको एस्थमेटिक अटैक होंगे तो वो उससे वर्ष के अंदर होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो जो एक डिजीज का इफेक्ट था वो खत्म हो गया, वो मास्क हो गया, अब दोबारा डिजीज वर्ष होके आएगी। द सेम गोज फॉर कोरोना। एंड अगर वो म्यूटेशन होती है तो लेट्स सपोज जो अभी जिन फॉरेन कंट्रीज के अंदर उसने इतना ऑलरेडी एक जो डेथ कॉज की है, हो सकता है कि नेक्स्ट म्यूटेशन के अंदर वो उनको ना इफेक्ट करे, पाकिस्तान को ज्यादा कर सके। और अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ सेकंड वेव ऑफ COVID-19, which I'm seeing as there are many patients in medical emergencies and the ICUs. So we must be very careful about any disease, not only this COVID-19, but also other conditions as well. Okay, so now what I'm gonna try to do is link physiotherapy with COVID-19 and allergy and asthma, right? So my question would be, how is physiotherapy linked with pulmonology, which is your department? Yeah, well, honestly speaking, it's a 50-50, because physiotherapy not only in the pulmonology but in the main of medical wards, in surgical wards, because if we will not do that, the most importantly there is a chance of DVT, deep venous thrombosis, pulmonary embolism. Bedridden patients, post-operative surgical patients, they are bedridden, so there are chances of dislodging of thrombus, and that can embolize into pulmonary artery vessels and can cause pulmonary embolism. So physiotherapy not only of the chest but the whole body is important part of medical care, nursing care, in any setup. As far as specifically if pulmonology is concerned, and in asthma, there is a considerable role of physiotherapy in treating these diseases. And not only in asthma, all respiratory disease, because there is a mucus plugging, there is a mucus secretion, there is a sputum, and patient has difficulty breathing. So if we will go for deep breathe, we will go for slow breathing, deep and other respiratory exercises, abdominothoracic movement, and slow rhythmic movement, and chest physio, and chest postural drainage most importantly. Okay, we always go for physiotherapist when we teach the people about postural drainage, in which side they should sputum स्पुटम उनको किस साइड पे निकालनी चाहिए, लेफ्ट पे, राइट पे, और किस तरीके से उनकी फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। देयर इज अ कंसिडरेबल रोल, एंड आई प्रेफर मोस्टली जब हम वार्ड में काम कर रहे हैं तो मैं खुद पर्सनली जो है ना वो एक तो फिजियोथेरेपी करना सिखाता भी हूँ। आई ऑलवेज कॉल द फिजियोथेरेपिस्ट वाया रिटन नोट्स कि ही और शी मस्ट कम एंड टीच द पेशेंट कि कैसे इस फिजियोथेरेपी को करना है और कैसे इफेक्टिवली वो आके बताते हैं। और उसका एक बड़ा रोल होता है, और उससे स्पूटम प्रोडक्शन के अंदर रोल मिलता है, उससे आपकी चेस्ट के क्लियरेंस के अंदर रोल मिलता है, इवन पेशेंट फील कंफर्टेबल आफ्टर दिस सेशन। सही हो गया। So doctor, considering only your experience, so how much has physiotherapy been helpful? मतलब आप अपने पेशेंट्स को जब आपने किया तो फिर उसके अंदर आपने फिजियोथेरेपी की कितना
आपका एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ? Have it been या helpful? मैंने जो सॉरी Has it been helpful for you personally, या with your patients? Yeah, as I said, there is a considerable, even 50-50 role. The 50% medication along with 50% physiotherapy can improve the outcome, can lead to the good prognosis. और जितने पेशेंट्स जो कि मैंने अभी पहले भी ऐड किया कि जो पेशेंट एसओबी के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, टेक्निक इरिटेबिलिटी के साथ हैं और उनको अपनी म्यूकस प्रोडक्शन के अंदर डिफिकल्टी आ रही है, तो आफ्टर फिजियोथेरेपी दे फेल्ट रियली वेल। वो एक जो चेस्ट क्लियरेंस है, जो जिसको हम पोस्चरल ड्रेनेज कहते हैं, कि पहले आपने पेशेंट को राइट साइड पे बिठा के फिजियोथेरेपी करवानी है, फिर उसको लेफ्ट साइड पे करवानी है, फिर उसको इस पोजीशन में करवानी है, और उस तरीके से पेशेंट जो है वो बेटर फील करता है, क्योंकि उसकी एक म्यूकस प्लगिंग होती है जो कि नो डाउट नेबुलाइजेशन से, जो आपकी ब्रोंकोडायलेशन से इंप्रूव होती है, बट patient really feel comfortable and I personally noted that कि after physio they feel comfortable, क्योंकि उससे भी आपकी जो चेस्ट क्लियरेंस के अंदर है, जो चेस्ट की मूवमेंट है और जो आपकी स्पूटम की एक्सपेक्टोरेशन है, उसके अंदर उसका एक कंसिडरेबल रोल है। Acha, doctor, please do help me understand the difference between general physiotherapy and cardio physiotherapy, and if there is a difference between this, then how much is cardio physiotherapy by patients? Sorry, the difference between cardio physio and General physiotherapy, we talk about generally, and then we talk about COVID, especially. Oh, sorry, cardio physiotherapy, especially. What is the difference there, and how much is cardio physiotherapy only important in case of the patients with allergies or asthma? जनरल के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम किसी भी मतलब के किसी भी सिस्टम को हम टारगेट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। वी टॉक अबाउट द जनरल। सो उसके अंदर हमारा जो एक चीज लैक कर रही होती है कि हमने अगर लेट सपोज एक पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें हमारे चांसेस होते हैं कि उसको डीवीटी हो गई है, ठीक है, तो हमने वहां पे अगर स्पेसिफिकली फोकस करना है तो हमने उस राइट या लेफ्ट लोअर लिम्ब पे फोकस करना है, उसके पोप्लिटियल के ऊपर, उसके काफ के ऊपर, उसकी लेग्स के ऊपर, उसके टोज के ऊपर फोकस करके हमने उस स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिकली उस एरिया के ऊपर फोकस करेंगे तो उस चीज का एक अलग से बेनिफिट है। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट द कार्डियो फिजियो एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियो, तो उस चीज का एक जनरल फिजियो से एक अलग से इम्पैक्ट है, ठीक है। आप जब कर रहे होते हैं फिजियोथेरेपी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, रिलेटेड टू कार्डियक, इवन रिलेटेड टू अदर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, अगर हम स्पेसिफिकली उस खास एरिया को टारगेट करेंगे जिसकी एक अलग से मूवमेंट होती है, जिसका एक अलग से रोल होता है, तो उसका जनरल फिजियो से कंसिडरेबल इफेक्ट होता है। जनरल फिजियो इज अ गुड, ठीक है। ओवरऑल आप जो है ना वो बॉडी को मूव करवाते हैं, वो हर डिजीज के अंदर प्रोफिलैक्टिकली हमें वो करवानी भी चाहिए, और that plays a really vital role. But when we talk about specifically either related to lower limb, either related to upper limb, either related to cardio or respiratory, that has the more beneficial effect because उसकी कुछ टेक्निक्स होते हैं जो कि जनरल से हटके होती हैं, और उस खास जिस पर्पस के लिए हम ये करवा रहे होते हैं उसके अंदर उसका एक रोल होता है जो कि पेशेंट्स के प्रोग्नोसिस को इम्प्रूव करता है। Okay. We are proceeding with our last three questions. Okay. So the first one, मतलब last three में से, is what is the home care protocol for patients with asthma, especially after they've had an episode? इफ इसमें ना मैं एक दो बातें प्रीवियसली अपने वाले रिपीट करूंगा कि अगर तो फर्स्ट अटैक हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमें डॉक्टर उसको असेस करेगा, उसकी हिस्ट्री लेगा और पेशेंट को समझा के भेजेंगे कि आपने घर में ये काम करने हैं। और उसमें से जो करने वाले काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट्स अपनी फैमिली हिस्ट्री प्रूव करेंगे कि अपने उनके वालिद को, उनके वालदा को, मदर, फादर, सिस्टर, किसी को इस तरीके की एस्थमा की एलर्जी है कि नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली दे विल गो फॉर द स्पेसिफिक एलर्जन, वो पोलन भी हो सकते हैं, वो घर के अंदर पैरेट्स होते हैं, पोलन होते हैं, वो भी हो सकते हैं, घर के अंदर कालीन होते हैं, कमरों के अंदर जो कुशन होते हैं, दैट कैन बी द सोर्स ऑफ एलर्जी, कारपेट्स होते हैं। इन द सेम वे अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के अंदर हैं, वहां पे अगर आपकी सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, निमोकोनियोसिस के अंदर, बाकी जो आपके इरिटेबल साइनाइड्स होते हैं, दैट कैन कॉज द एलर्जी। इन द सेम वे अगर आप कोई डस्ट की एलर्जी है,
उससे है, कोई फूड पार्टिकल से एलर्जी है, तो पेशेंट्स को ये चीज समझा के घर भेजी जाएगी कि अपनी फैमिली हिस्ट्री को रूल आउट करें, अपनी पर्सनल हिस्ट्री को रूल आउट करें, अपनी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री को रूल आउट करें, और जो एक कंप्लाइंस है मेडिसिन की, कि उसकी टेक्निक क्या है, प्रेफरेबली पेशेंट्स को हम ये गाइड करते हैं कि ये मेडिसिन लिख दी है, स्टोर से लेके आए, और जो पहली डोज होगी वो मरीज को यहाँ से समझा के भेजनी है कि आपने इस तरीके से जो है ना इसको यूज करना है, और घर जाके आपने ये एहतियात करनी है, मुंह पे मास्क रखना है, मतलब कि ये वो सारी जो पेशेंट एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, अगर ये पेशेंट को हम यहाँ से समझा के भेजेंगे तो पेशेंट का जो आउटकम होगा, जो डिजीज का प्रोग्नोसिस होगा, वो बहुत अच्छा होगा। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि एक तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं गवर्नमेंट सेटअप के अंदर, एक तो पेशेंट का लोड इतना ज्यादा होता है, मैन पावर रिड्यूस्ड होती है, पेशेंट को ये चीजें बताई नहीं जाती, जो कि मेन रीजन है अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स की पुअर कंप्लाइंस की, और डिजीज के जो प्रोग्नोसिस है वो कम होने के, इससे जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन के साथ मरीज आते हैं। पहले हम उनको स्टेप 1 पे मैनेज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंप्लाइंस ना होने की वजह से फिर उनको स्टेप 2, 3, 4 नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स की एजुकेशन जो है ना, और उसको जो गाइडेंस है घर के अंदर, वो जरूर मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी डिजीज के साथ जो है ना वो समझौता ना करे, और अपना जो ट्रीटमेंट उसको प्रॉपरली ले। ठीक हो गया. So that also kind of answered my second last question. So we're going to proceed with the last one, which is I'll ask you to share some of your experience being in the COVID ICU. मतलब how has it been for you personally? आपका किस तरह का experience रहा overall? Yeah, the overall, honestly speaking, the overall experience is not good, because putting your life at risk is not easy. We always give credit to others for risking their life. In the same way, we are also risking our life, because almost 100 plus doctors across the country gave their life in this pandemic, just while working in COVID ICU, in COVID exposure. So it's not easy that you put a hazmat suit and 95 mask and gloves and caps and this and that, and you go inside, there is proper viral infection and people are there, and you see people dying there. So it's not an easy job, but still we are committed to do our job, and inshallah we will continue our job. But the main thing, as working in this ICU, I have noted that there is a second wave, there is a second surge of COVID-19, just because the violation of SOPs. लोग अब जो है ना उस वायरस को उस तरीके से नहीं दे रहे, लोगों ने एसओपीज ब्रेक करने शुरू कर दिए हैं। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फेस मास्क राइट नाउ, देयर इज पब्लिक गैदरिंग, रिलीजियस एक्टिविटीज, political activities are there without any SOPs. So the patients are increasing right now. So our my only suggestion or advice to the public will be keep distance and maintain SOPs of government, which you already did 3 to 4 months back. तो इस तरीके से अगर वो करेंगे तो एक जो है ना वो सेकंड वेव जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो कि आ भी रही है, क्योंकि एक राइजिंग ट्रेंड आ रहा है कर्व के ऊपर पेशेंट्स का, वो उसको हम रोक सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो अगर पब्लिक हमारे साथ है तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से हम इसको बीट कर देंगे इंशाल्लाह। I'd agree कि tough होगा. I could also see that coming from your gestures when you were like, क्या experience है मेरा, क्या बताऊँ. So yes, सही हो गया. We're gonna move on with the questions shared here in the comments. Starting off with the very first one, which is someone asked about the role of OT in asthma. Role of OT. I'm not sure what OT is. Role of OT in asthma. Yeah, that is what the person told. I'll ask the person, whoever asked, please elaborate your question so that we can come back to it afterwards. Second question, which is physiotherapy compulsory to treat patients? Sorry, question was, is physiotherapy compulsory to treat asthma? No, not compulsory. Okay, to be very frank, not compulsory, but if we will do that, we can increase the prognosis of the disease, because physiotherapy can add the things in treating the ailment. If we will do that, we must stop the disease process at that level.
So it must be added. But if we will talk about, because there are different levels of protocols, treatment protocol, step 1, step 2, 3, 4, 5, nursing care, and then physio care, and then bed care. In the same way, if we will say that this thing is compulsory, that would be unfair, because there are different protocols. And if we will go to step 4 treatment instead of step 1 treatment, that will be not fair with step 1 treatment. So we must consider all things necessarily to cope the disease. But I don't think the compulsion is the thing, depending on the severity. If the patient is immobile, if the patient is unconscious, if the patient is not up to level to clear his own or her own chest, then we must go for physiotherapy, and that plays a definite role, obviously. I hope that answers the question. Okay, so we have it. OT is basically occupational therapy. Nurulan asked the role of occupational therapy Yeah. in asthma. Okay. Okay. Now repeat the question. She's asking about the role of occupational therapy in asthma. Yes. Uh, in If we talk about the triggers which cause the asthma, there is a role of occupation. We have many workers in the industries which have exposure to those specific particles, like cement industry, lead industry, iron industry, copper industry. In the same way, we have people working in the cement industry are exposed to silica, asbestos, which cause the lung cancer at later stage. So, if we talk about that occupational therapy, and we have noted that जो लोग अपने वीकेंड के ऊपर घरों में आ जाते हैं, वो अपने सिम्टम्स से रिलीव हो जाते हैं, एंड व्हेन दे गो टू वर्क ऑन मंडे, दे अगेन बिकम डिस्निक, दे अगेन feel and they observe sign and symptom of shortness of breath. So if in those patients, we always prefer to quit that job. हम कोशिश करते हैं कि वो लोग जो है वो अपने उस इंडस्ट्रियल एक्सपोजर से अवॉइड करें, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर होगा और कॉन्टिन्यूस उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और कॉन्टिन्यूस फाइनल सिम्टम आते रहेंगे. सो अगर हम उसका प्रोफेशन ही चेंज करवा दें, उसका ऑक्यूपेशन चेंज करवा दें, उसका जो स्पेसिफिक एरिया है वो चेंज करवा दें, तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं ऑक्यूपेशन के अंदर, एनवायरमेंटल के अंदर. तो अगर हम उनको कंसीडर करें तो हम इस एस्थमा को, जो दोबारा एक अटैक्स हो रहे हैं, जो उसकी रिकरेंस हो रही है, या इवन अगर उसकी सिवियरिटी भी जो हो रही है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. एंड यस, देयर इज अ रोल. समवन आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन. Yes, the next question, एक और बहुत interesting question है, लेकिन उससे पहले I am going to take this one. Someone asked about the prognosis of asthma. Yeah, it depends upon the severity. ठीक है, कितना उसकी फैमिली की हिस्ट्री में क्या है, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या आ रहा है, उसकी हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री प्रूव करेंगे कि उसको ये कब से साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, और फिर हम उसको देखेंगे कि किस स्टेप, 4 to 5 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो किस स्टेप के ऊपर जाके वो उसका एस्थमा कंट्रोल होता है और वो कितना कंप्लायंस शो करता है, और वो जो उनको जो प्रिकॉशंस बताई हैं पेशेंट्स को वो कितनी ले रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एस्थमा की ग्रेड्स वेरी करते हैं. अगर कोई पेशेंट है जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जिसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, जिसको थोड़ी सी एलर्जी है जो कि बाद में एस्थमा में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम शुरू में ही कंट्रोल कर सकते हैं. बट अगर एक पेशेंट है जिसको फुल फ्लेज एस्थमा, जो कि स्टेप 4 स्टेप 5 के लेवल के ऊपर जाके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और उस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री के अंदर भी आ रहा है उसके मदर फादर किसी और रिलेटिव को ऐसे सांस का मसला था, या उसको पिछले कुछ 5-7 सालों से हर दफा जब सर्दियां आती हैं, जब जैसे मौसम चेंज होता है, उसको ये नजला और खांसी और जो सांस की खराबी है, आवाजों में सीटियां आना सांस लेते हुए, वो आनी शुरू हो जाती हैं. इट मीन्स कि पेशेंट्स को एक जो है वो मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी का एस्थमा जो का जिसका प्रोग्नोसिस एज कम्पेयर टू द माइल्ड फॉर्म वो ऑब्वियसली कम है. तो डिपेंड करता है कि पेशेंट के क्लिनिकल के ऊपर, पेशेंट की लैब वैल्यूज के ऊपर और डॉक्टर की असेसमेंट के ऊपर. वहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं इस पेशेंट का नेक्स्ट क्या प्रोग्नोसिस होगा. Acha, doctor, this one question kind of really interests me. Coming from a microbiological background, I have no idea physiotherapy के बारे में, but this question is like, why a normal person suffers from breathing while eating a meal or is at rest, but feels better during exercise like playing cricket? Sorry, The thing repeat that the question. interests me
The thing that interests me is he is asking, I guess it's a he or she, why a normal person suffers from breathing while eating during exercise like playing cricket. Does this happen? I'm very much curious to know about this. Actually, I didn't get a question clearly. There is a breathing issue at rest, and the patient is comfortable in playing. Really sorry about these unavoidable issues. Doctor, did you get my question or should I repeat it again? Yeah, please repeat. Acha, so someone asked why a normal person suffers from breathing problems while he's eating or is at rest, but feels better during exercise like playing cricket. The first thing that intrigues me is, does this happen? And secondly, No, I of course, yeah. I don't think so. That can be the dramatic कि उसको खेलने नहीं दे रहे या वो कहीं बाहर नहीं जा रहा तो वो घर में कोई इस तरीके का करना शुरू कर दे. I think so that can happen, but I don't think कि ऐसी कोई डिजीज हो कि आप अगर घर हैं तो आपको सांस का मसला हो जाए और आप बाहर खेलने जाए तो आप ठीक हो जाए. But there is an exercise induced asthma, which I must say कि एस्पिरिन इंड्यूस्ड, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, ऑक्यूपेशनल, वो हो सकता है कि आपको खेलते हुए थोड़ी सी देर के लिए सांस खराब हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो कि आप घर हो रेस्ट कर रहे हो तो सांस खराब हो जाए एंड यू जस्ट गो आउट एंड प्ले क्रिकेट एंड प्ले और डू एनीथिंग एंड यू फील बेटर. दैट कैन बी साइकोलॉजिकल और मैं भी यही सोच रही थी. मैं चलो फिजियोथेरेपी का तो नहीं इतना पता, लेकिन स्टिल okay, how was हाँ. this ever possible? There is this last question we're gonna take before ending the session, and that is from Ikra. She's asked chest physiotherapy for the management of breathing disorders. Yeah, not only in asthma but in all respiratory issues, in asthma, in COPD, in lung CA, in other fibrotic diseases जो लंग की फाइब्रोसिस करती हैं, जो हम आम जबान में जिसको कहते हैं कि फेफड़ा का सुकर जाना, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर सांस की तकलीफ हो जाती है, नालियां तंग हो जाती हैं. अब रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन दिस कंडीशन इज वेरी कंसिडरेबल कि आपने चेस्ट फिजियो करवा के उस पेशेंट की एक तो पोस्टरल ड्रेनेज करवानी है और पेशेंट्स आई पर्सनली से मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि पेशेंट्स जो है वो नेबुलाइजेशन के बाद, आईवी इंजेक्शन के बाद, आईवी मेडिकेशन के बाद फिजियोथेरेपी पे जब इवन अगर पेशेंट का उस वक्त सांस खराब हो रहा है तो चेस्ट फिजियो के बाद पेशेंट रियली फील कंफर्टेबल. ठीक है, आई पर्सनली हैव नोटेड दिस थिंग क्योंकि उससे आपकी एक तो जो है ना वो एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है, चेस्ट पोस्टरल ड्रेनेज होती है, स्पूटम प्रोडक्शन हो रही होती है लेकिन बाहर नहीं निकल रही होती. तो जब आप पोस्टरल ड्रेनेज करवाते हो तो उससे वो जो एक प्रोडक्शन हो रही है स्पूटम की, जो एक्सपेक्टोरेंट अंदर इकट्ठा हुआ पड़ा है, उसको वो बाहर निकाल देते हैं पोस्टरल ड्रेनेज से. तो उससे पेशेंट जो है ना वो कंफर्टेबल फील करता है. तो जो भी कंडीशन है, नॉट ओनली आई अगेन रिपीट, नॉट ओनली इन द रेस्पिरेटरी बट इन अदर कंडीशन एज वेल, न्यूरो लाइक इन न्यूरो देयर इज अ स्ट्रोक, पेशेंट को फालिज हो जाता है, फिजियो प्लेज रोल. पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल पेशेंट बेड रिडन होते हैं, उनकी डीबीटी के चांसेस है, वहां पे फिजियोथेरेपी का रोल है. इन द सेम वे रेस्पिरेटरी इश्यूज, chest sputum production is there but sputum is not coming out, so chest physio से हम sputum production increase करवा सकते हैं, chest clearance करवा सकते हैं. So there is a role of physiotherapy in not only the respiratory issues but in the non-respiratory conditions as well. Thank you so much, doctor. I guess that answers your question, Ikra. So yeah, that's it for today. If there are any other questions जो कि आप पूछना चाहते हैं, please do leave them in the inbox so that we can answer them later on because we're running out of time. So again, thank you so much, doctor, for your time and share of knowledge. It was great to have you here, and you know the cytokine storm syndrome वगैरह ये वो वगैरह
That was quite interesting. Anyways, I'm sure other people would also have had learned a lot. Yeah, thanks to you as well, Saida, and thanks to this platform for inviting me. And also, this was very important topic कि किस तरीके से हम एक तो अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को गाइड कर सकें और किस तरीके से हम कम्युनिटी को गाइड करें, क्योंकि डॉक्टर्स तो एक चीज पढ़ के, जो मेडिकल प्रोफेशनल है, वो चाहे जिस कैटेगरी से भी हो, वो पढ़ के चीजें खुद याद कर लेते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स को बताने वाली बातें होती हैं वो, चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पेशेंट लोड इतना ज्यादा होता है, हमारे पास मैन पावर रिड्यूस्ड होती है, तो हम उस तरीके से पब्लिक को वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकते। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मैंने कुछ बातें, जो कि जितना मेरा नॉलेज है, उसके थ्रू मैंने जितना कन्वे कर सकता था कम्युनिटी को, अपने मेडिकल प्रोफेशनल को या इवन आम पब्लिक को, कि ये जो हम एक पुअर कंप्लायंस देखते हैं, मेन मेन ट्रीटमेंट जो है जिसकी वजह से कंप्लायंस नहीं हो सकती, वो ये थी कि मेडिसिन लेने का तरीका और मरीज को घर जाके क्या क्या करना चाहिए और जो फिजियोथेरेपी का रोल है, ये तीन चीजें मेरा जो है ना वो मेन फोकस थी आज के ऊपर। तो होपफुली के लोग इसको देखेंगे और इससे लोगों को फायदा होगा और होपफुली वो बातें मानेंगे भी सही जो बताई। अच्छा अच्छा, क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी भी, बट डॉक्टर कर चुके हैं, लाइक एलर्जिक रिएक्शन वर्सेस एस्मा को डायग्नोस करना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह की बात हो चुकी है, सो आई एम नॉट गोना आस्क हिम अगेन टू आंसर दिस. So anyways, there was a lot that we learned today. Thank you so much for the audience for Yeah, being here, welcome. staying with us, and we will certainly see you guys in some other session some other day. Thank you so much. Yeah, Allah sure. Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz.